Hello dear students, welcome back to our YouTube channel CHSE Science Classes. तो आज जो फिजिक्स लेक्चर में मेनली डिस्कशन करें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ वेव ऑप्टिक्स दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विषय में ऑलरेडी गोटे स्मॉल इंट्रोडक्शन मुझे देती प्रीवियस वीडियोस रे माने जोटा कि हमर डायरेक्ट एविडेंस थिला वेव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. ओके एंड से विषय में डिस्कशन करवा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. देन आम डिस्कशन करवा अबाउट कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी कौन माने को जगह आमर मैक्सिमम इंटेंसिटी आसो एंड को कंडीशन सैटिस्फाई हेले मिनिमम इंटेंसिटी और मिनिमम आसो से विषय डिस्कशन करवा. नेक्स्ट आम डिस्कशन करवा अबाउट फ्रिंज विड्थ डिटरमिनेशंस. ओके सो ये टेक्निकल टर्म सो डिटेली आम डिस्कशन करवा. And before going into that, don't forget to subscribe our channel CHSE Science Classes. जोटि आम एक्सक्लूसिवली कंटेंट दौचु स्टूडेंट्स फॉर CHSE मीडियम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स. एंड प्लीज जॉइन आवर फेसबुक पेज सेम नेम CHSE Science Classes. सो आमर किसी जदि नुआ वीडियो आम अपलोड करचु सो ये आम लिंकटा दी दौचु तार और किसी आम नुआ PDF और मटेरियल जदि आम अपलोड करचु तो ये फेसबुक पेज ने हमें नोटिफिकेशन दे दूँ. एंड ये मैंने डाउट फाउट एगुड़ा भी डिस्कसन करेंगे. ओके या सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कौन. सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय थॉमस यंग. तो एक्सपेरिमेंट इज वेरी सिंपल. सो तार स्कीमेटिक डायग्राम माने जो स्कीमेटिक डायग्राम टा हम देखिए कौन होची. या सो फर्स्ट आम कौन नवा सोर्स नवा. ओके सो दिस इज आवर सोर्स प्राइमरी सोर्स एस एंड so which will be placed in front of a double slit. Okay so it ना रही हमरो इंडिकेशन मिलुची double slit माने double two slit माने होची this is called our slit. Okay so double slit टाइप में सोर्स सामने रखिबा and which will be symmetrical with respect to the source. माने जो सोर्स टा रहला ताको जो दीटा जो स्लिट रहला S1 and S2 हम ना दबा so आकु symmetrical रहइबो. so this is double slit. नेक्स्ट मुझे कौन करी कि गोटे विथ आफ्टर ए सर्टेन डिस्टेंस मोटे स्क्रीन टे रखी जोटि कि हमर इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्मेशन हो. ओके एंड दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस. या सो सपोज ये दुटा डबल स्लिट रो जो माने हम ऑलरेडी हमें पढ़ी इन द लास्ट क्लास दिस डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट राइट. माने जदि एठी लाइट वेव गुड़ा जदि ट्रांसफर कला then it हम कौन S1 and S2 it will behave like secondary source. so समान को ना देली S1 and S2 so these are secondary source and the distance between S1 and S2 is D. so समान को इधर distance है D and the distance between this double slit arrangement and the screen is capital D. okay so it confusion तो नहीं so it small d होची distance between S1 and S2 and slit and screen between distance is capital D. So usually this capital D is very greater than small d. Okay, fine. So next कौन होगा S1 and S2 रू suppose ए दीटा light पास है कि जाओ चली and along this direction एंड माने P point रे suppose meet कर चली. तो जो P point जो असला so ए P point रे we want to find out the intensity of the light. Okay, so our main objective is to find out the intensity of the light at this point only. Okay, so जो P point असला ये P point है so we want to find out how much intensity we are getting. Okay, तो आप next देखिए कौन अच्छी डायग्राम टा. या so suppose मैं एक पॉइंट निकले सी which is exactly at the center of this S1 and S2 and the distance between the center and this point P is suppose y. Okay, तो y होची distance between the center point जोटा कि हमारा जस्ट S1 and S2 को पूरा सिमेट्रिक है कि स्क्रीन पोजीशन रोची. एंड लेट मी ड्रॉ दिस थ्री लाइन्स फॉर यू एंड मन को ना दे देली मु D एंड कैपिटल E राइट. एंड सो ऑब्वियसली जेतु C टा मिड पॉइंट असला तो हम लिख परिबा सो दिस DC विल बी D/2 एंड CE विल आल्सो बी D/2 राइट बिकॉज जेतु C पॉइंट टा पूरा एग्जैक्टली मिड पॉइंट अछि सो दैट्स व्हाई एंड S1 and S2 डिस्टेंस होची D. So DE मध्य का इसको D आसो so DC equal to C equal to D/2 that is D/2 and D/2. Okay, so this is our diagram. So next मैं कौन करची S1 point रो ये जो S2P line रे मोटे perpendicular draw करची
एंड ये जो एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस आसला ताको मुझे गली एक्स ओके सो एक्स्ट्रा डिस्टेंस हूँ कौन आपको कहुए पाथ डिफरेंस सो ऑब्वियसली आम देखिपर S1 पॉइंट एंड S2 पॉइंट कौन बेसिक डिस्टेंस ट्रावेल कला लगुच राइट सो केते एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रावेल कर जानापी कौन करा पड़े हमको सो वी जस्ट ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम S1 टू S2P सो जो पॉइंट रे इंटरसेक्ट कला सो से पॉइंट रू S2 रो डिस्टेंस जे आसला ताको कह जाए पाथ डिफरेंस सो ताको मुझे गली एक्स तो हमको एक्स हमको एक्सप्रेशन बाहर करिया पड़ो कहीं जो पी पॉइंट आमर इधर इंटेंसिटी मैक्सिमम हम और मिनिमम हम दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन दिस पाथ डिफरेंस ओके सो से विषय में डिस्कशन करिया ओके okay so let's start करेंगे हमारे derivation टा light after passing through a pinhole S is allowed to fall on pinhole S1 and S2 right so it is हमारे रोइला source टा light on S it completely fall on this S1 and S2 तो हमारा P point रे हमको intensity check करवार है right okay yeah so it like you हमें let P be a point let P be a point on the screen where we are interested to find the intensity of the light beam right okay so हमको कौन करिया छी P पॉइंट रा हमरो इंटेंसिटी फाइंड आउट करिवार छी ओके सो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर देतली कोन ए जो पॉइंट हम देखछु x पॉइंट सो दैट इज आवर पाथ डिफरेंस ओके सो नाउ आई कैन राइट हियर मु इक्वेशन टा रेड कलर लिखछि सो वी कैन राइट आवर पाथ डिफरेंस x is equal to मु लिख परबी x is equal to S2p minus S1p लिख परबी ना बिकॉज जेहेतु मुझे S1 गोटे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पॉइंट रे एंड दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को नहीं x सो दैट माय x इज इक्वल टू S2p माइनस S1p लिख पारि ओके सो मत कौन करिया पड़ो S2p एंड S1p रो वैल्यू मते डिटरमिनेशन करबा अछि ओके सो केमते डिटरमिनेशन करबा ओके सो एडे देखन तो गोटा ट्रायंगल मु नहीं जाउची S1PD ट्रायंगल ओके S1PD ट्रायंगल मोर मेन ऑब्जेक्टिव होची मते S1p एंड S2p रो वैल्यू फाइंड आउट करबा अछि तो एठी मु ले जाउची सपोज या सो इन ट्रायंगल S1PD तो हमें नहीं परिबे कि नहीं S1p होची एटा होची हमर कोन 90 डिग्री आसला तो हमें पाइथागोरस फार्मूला में यूज कर परिबा तो पाइथागोरस फार्मूला जदि हम यूज करबा तो S1p होल स्क्वायर हम कोन लिख परिबा S1p होल स्क्वायर इज इक्वल टू केता आसीबो S1p होल स्क्वायर इक्वल टू S1d होल स्क्वायर सॉरी तो S1p होल स्क्वायर इक्वल टू लिख पारे हमें S1d होल स्क्वायर प्लस PD होल स्क्वायर लिख पारे ना नहीं बिकॉज जेहेतु गोटे राइट एंगल ट्रायंगल सो S1p होल स्क्वायर इक्वल टू S1d होल स्क्वायर प्लस PD होल स्क्वायर ओके नाउ S1d माने केते S1d रो वैल्यू होची d so that's why I am writing as d square plus what is the value of PD so it देखो तो PC रो वैल्यू होची y DC रो वैल्यू होची d by 2 so PD रो वैल्यू केते आसीबो y minus d by 2 राइट सो मु डायरेक्ट लिख दोची y minus d by 2 होल स्क्वायर ओके सो एटा आसला हमरो S1p होल स्क्वायर रो वैल्यू ओके सो नाउ सो नेक्स्ट हम कौन फाइंड आउट करबा सेमती S2p रो वैल्यू फाइंड आउट करबा सो S2p पय हम कौन करबा से आ गोटे ट्रायंगल हम नबा S2p ई ट्रायंगल नबा सो सेमती लिखबा इन ट्रायंगल S2p ई तो एठी मते कौन करबा अछि S2p रो होल स्क्वायर डेफिनेटली से सेम प्रोसेस में यूज करछि
so that will be S2E whole square plus PE whole square, right? तो तापे हम जदि एमती वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करबा सेम S2E रो वैल्यू केते S2E रो वैल्यू होची D तो सेम आसीबो से D स्क्वायर प्लस तो नाउ PE माने केते PE so PE equal to PC plus CE, right? So PC माने होची y, CE माने होची D by 2, so that's why I can write that is y plus t by 2 whole square. Okay, so this is our S2P whole square. So mark these two equations. So it's very simple, just mu Pythagoras formula use करछि आ मु किछि एक्स्ट्रा किछि करि. Okay, right. No. Okay. Next हम कौन करबार छी मतलब वैल्यू फाइंड आउट करबार छी S2P minus S1P. ओके तो केमती फाइंड आउट करबा वेरी सिंपल तो मु नउची S2P whole square minus S1P whole square मु नउची. ओके ओके सो मतलब फाइंड आउट करबार छी S2P minus S2P whole square minus S1P whole square value मते के फाइंड आउट करबार छी. सो सब्स्टिट्यूट करबा इक्वेशन 2 minus इक्वेशन 1. सो व्हाट इज S2P? दैट इज D square plus y plus D by 2 whole square. So this is S2P, right? S2P whole square bracket minus S1P whole square माने कहते D square plus y minus D by 2 whole square. This is bracket number 2. So just bracket में ये कर दबा तो कौन आसीबो D square plus y plus D by 2 whole square minus D square minus y minus D by 2 whole square. So ये जो D square कौन हो कैंसिल हो गला. तो ये जोड़ा आसला हमर कौन पैरामीटर y plus d by 2 whole square minus y minus d by 2 whole square. तो ये फॉर्मूला में इक्वेटेड अच्छे कौन a plus b whole square minus a minus b whole square. तो आर फॉर्मूला होची कौन 4ab. सो वेरी सिंपल हम कर पारे जस्ट ब्रैकेट ये कले a square and b square टर्म कटि जिवो 2ab minus minus 2ab that is 4ab आसीबो. So that time लिख पारे 4 into y into d by 2, so that will become 2y into d. Okay, 2y into d आसीबो. Okay, next तो मु कोन एटी फाइंड आउट करथली S2P whole square minus S1P whole square. तो एटी जो इक्वेशन आछला एटा कोन होची S2P whole square minus S1P whole square. तो तक मु एमति लिख परबी नै S2P plus S1P multiplied by S2P minus S1P. Very simple. A square minus B square formula is A plus P into A minus B. Okay. So now it is diagram देखो. Yeah. So ये diagram पे जेहेतु our distance capital D is very large, so we can take S1P nearly equal to S2P is equal to capital D. So हम नहीं परिवा कहने जेहेतु स्क्रीन हम बहुत दूर रे रखछु, so that say the distance would have बहुत माने nearly same आसीबो. S1P and S2P रो distance will be nearly equal to D. तो ताको जदि हम सब्स्टिट्यूशन कर दबा एठी तो से केते आसीबो S1P and S2P अगर हम D सब्स्टिट्यूशन कर देले सो एटा कंडीशन लिख दोछि. So that is S2P nearly equal to S1P nearly equal to D, and S2P minus S1P रो वैल्यू हमें ऑलरेडी जानछे ताको नै है x. तो वैल्यू गुडा हमें सब्स्टिट्यूशन कर दबा. सो से केते आसीबो S2P plus S1P आसीबो 2D into and S2P minus S1P रो वैल्यू आसला x is equal to आर वैल्यू केते नबा हमें 2yd, that is 2yd, sorry 2y small d. तो वैल्यू हमें केते नबा 2y small d. Okay, so 2 to cancel है जो बोथ साइड रो तो कहता है x रो वैल्यू x is equal to y d by capital D.
So this is our expression for path difference. Okay, so is your expression basla x equal to y d by d. So this is our expression for path difference. Okay, so ये path difference रो value को नहीं हमारा माने इधर condition टा हमारा कौन maximum intensity आसी पारे और minimum intensity आसी पारे. So कौन maximum? Okay, so ये कौन इटा हमारा रहला same arrangement single slit रहला then double slit रहला. So ये हमारा different pattern उड़ा formation होगा. Like maximum माने alternative dark and bright pattern formation होगा. So जो point रे हमारा light रो intensity अधिक होती हो ताकि वजह maximum intensity एंड जो लाइट इंटेंसिटी कम रहा ताकि मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी को हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी को हमें मिनिमम कहीपर. सो ये मोर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एमती देखा मिलूला. सो ये जो पॉइंट आसला माने जो रेड कलर पॉइंट आछे. ओके, सो ये जो रेड कलर पॉइंट आसला ये सपोज ये जो रेड कलर पॉइंट. सो दैट इज आवर मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट दैट इज मैक्सिमम एंड दीटा रेड मझे जो ब्लैक कलर लाइन जो आछे. ओके, सो ये देखिए ब्लैक कलर लाइन. सो ये जो गैप रे, so that is our minimum intensity point that is called minimum. Okay, so maximum and minimum are condition that depends on this path difference between these two lights. Okay, so theta light or path difference upare depend करे. So लिखियो हमें condition for maximum point. Okay, so हमें लिखियो एटी maximum. Okay, तो कौन कहूची point P will be a bright spot. Okay, so लिख दो जी point P will be a bright spot if the path difference x the path difference x is even multiple of lambda by 2. Okay, so এটা হচ্ছে আমার কন্ডিশনটা মানে যেটা পাথ ডিফারেন্স এক্সটা ইভেন মল্টিপল অফ lambda by 2. lambda হচ্ছে wavelength of the light. So যেটা হবো then we will get our bright spot, so that is called our maximum intensity. Okay, so तापर कौन कंडीशन आसीबो ताले x is equal to माने कौन y d by d. So I will write like this. So that is y d by capital D will be even multiple of lambda by 2. So even multiple माने 2 and lambda by 2. I can write like this, where n is any integer like 0, 1, 2, 3 like this. So this is the condition for maximum intensity. Okay, and और आपको जो हम अरेंज कर लिखा तो आपको एमती लिख पार y इक्वल टू n lambda कैपिटल D by small d. ओके, सो आपको जो हम यू करवा माने आपको जो हम रेफरेंस नवा ए इक्वेशन तो हमर को पॉइंट रो ब्राइट स्पॉट आसो तो हम लिख पार एमती. So the bright spots will be observed at which distance. तो अब एन जगह हम वैल्यू गुड़ा सब्स्टिट्यूशन करवा n इक्वल टू 0, 1, 2 एमती सब्स्टिट्यूशन करवा तो से केते आसीबो फर्स्ट टाइम एन जगह जो हम 0 सब्स्टिट्यूट करे केते आसीबो 0 आसीबो 1 पकाइले lambda d by d. नेक्स्ट 2 पकाइले 2 lambda d by d. 3 पकाइले 3 lambda d by d. सो ए टाइप रो आसीबो. So this is our condition for maximum intensity. Okay, so now जब एटा जो बुझी गले so minimum intensity किछि नै से सेम. Okay, so next होचे हमर कोन minimum intensity और minimum मान होची minimum intensity. तो ता पे डेफिनेशन कोन आसीबो point P same. Point P will be a dark spot or minimum intensity if the path difference
is odd multiple of lambda by 2. Odd multiple of lambda by 2 माने कौन से हमर जो सेम फार्मूला रहला हम से सेम जो करबा y d by d. now it will be odd multiple. odd मान हो 2n plus 1 lambda by 2. ओके तो सेटो हम y रो वैल्यू कोन आछो से सेम. सो से सेम आछो हमरो 2n plus 1 into lambda d by 2d. ओके सो वेरी सिंपल वन. ओके सो जदि एठी मध्ये से n रो वैल्यू हमर कोन आछो 0 1 2 3 हम एमते टाइप रो नै परबा. तो से अनुसार हमर को पोजीशन हमर मिनिमम आछो से सेम टाइप रो हम लिख परबा. hence the dark spot or the minima point are तो कोन आछो को पॉइंट आछो. सो एन जगह हम 0 सब्स्टिट्यूशन करबा केते आछो 0 जो हम एठी सब्स्टिट्यूशन करबा. सो आछो lambda d by 2d. so that is lambda d by 2d. जो हम 1 सब्स्टिट्यूशन करबा सो से आछो केते 3 आछो. so 3 lambda d by 2d, right? so that is 3 lambda d by 2d. next आछो 5 lambda d by 2d and so on. so this is the condition for dark point or that is minimum. okay so हम दीटा कंडीशन पढ़ले. गोटे होचे हमर मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट. नेक्स्ट ता पय कंडीशन कोन थिला इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 पाथ डिफरेंस माने हम जो x पैरामीटर जो कैलकुलेट करथिले. सो दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2. इवन मान होचे 2n लैम्बडा बाय 2. सो हम एन रो वैल्यू जहां पकड़ले ए पैरामीटरटा इवन आसीबो. सो पे ऑड पे कोन करबा दैट इज 2n plus 1 लैम्बडा बाय 2. सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. सो प्राय स्टूडेंट कंफ्यूज होती माने मैक्सिमम को ऑड मल्टीपल कर देंती, मिनिमम को इवन मल्टीपल कर देंती. सो बी वेरी केयरफुल. ओके सो दिस इज द कंडीशन फॉर maximum and minimum intensity. okay so next time देखिबा कोन about fringe width. fringe width beta means the distance between two consecutive bright or dark fringes. okay माने जो दुईटा consecutive bright or dark fringes आसिला सो समान को भीतर डिस्टेंस को कहै जेबो कोन fringe width. तो एटा हमर कोन आसिला जो ग्रीन कलर जोटा मु इंडिकेट करछि. सो दीज आर कॉल्ड आवर bright fringes, right? so these are so it was हमरो bright fringes. so this is my bright fringe and in between जो আছে हमरो black color जोटा हम इंडिकेट करछि. so this black color. so this is my dark fringes. okay तो एमान को भीतर जो डिस्टेंस আছে ताको आजिबो कोन fringe width beta. okay माने ए जो दुईटा भीतर डिस्टेंस हला ताको हम कहि परिबा बीटा और दुईटा डार्क स्पॉट रो मध्ये डिफरेंस को हम कहि परिबो सेटा होची बीटा. okay तो हमन कर भीतर कोन फार्मूला होची सेटा हम कैलकुलेट करबा. देखिए केता आछि कोन कैलकुलेशन ऑफ fringe width. कैलकुलेशन ऑफ fringe width. तो केमति कैलकुलेशन करियो. सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright or dark fringes. जोटा हम ऑलरेडी कहि देछि. सो लिखियो स्टार्ट लेट xn and xn minus 1 represents the nth and n minus 1 bright fringe on the screen. okay हमर डेफिनेशन कोची fringe width माने होचे fringe width हमें निया जाउछ कोन बीटा हमें होछ fringe width that is beta. so the distance between two consecutive bright fringe or dark fringe. तो हमें कोन करले हम दीटा पॉइंट नेले. सो समान गोटो होची nth पॉइंट एंड गोटो होची n minus 1 पॉइंट. तो समान को भीतर डिस्टेंस केते आसीबो बीटा आसीबो. ओके सो हम लिख परियो हमें बीटा इक्वल टू xn minus xn minus 1, राइट? ओके सो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूशन करबा. सो xn रो वैल्यू कोन आसीबो सेमती n into lambda d by d आसीबो माइनस एठी हमरे n minus 1 माने कोन सिंपली n जगह n minus 1 हम सब्स्टिट्यूशन करबा lambda d by d. ओके सो कोई सॉल्व करबा हम ठीक है. सो इट्स वेरी सिंपल. ओके सो इडम कोन करछि ब्राइट फ्रिंज रो डिस्टेंस को कैलकुलेट करछि. सो ब्राइट फ्रिंज में हम ऑलरेडी हमें डिराइव करथिले कोन फार्मूला ए जस्ट हमें एठी डिराइव करथिले सॉरी या दैट इज n lambda d by d. तो n पय आसी n lambda d by d
n -1 पे सिंपली n जगह में सब्स्टिट्यूशन करवा n -1 तो से आसला n -1 d by d तो ये कौन कॉमन अच्छी लैम्डा d by d कॉमन अच्छी तो ये हम लैम्डा d by d कॉमन नहीं जीवा लैम्डा d by d कॉमन तो ये आसो n -n + 1 आसो तो n कैंसिल हो सी आसला लैम्डा d by d बीटा इक्वल टू लैम्डा d by d ओके तो से सेम जिनस आम डार्क फ्रिंज पे भी कैलकुलेशन कर पारियो तो से सेम जिनस ही आसीबो राइट सो डार्क फ्रिंज पे जदि आम कैलकुलेशन करबा सो डार्क फ्रिंज रो भी से सिमिलर टाइप रो एक्सप्रेशन आसीबो सो फार्मूला कोन अछि हमरो 2n + 1 लैम्डा d by 2d तो सेठी में हम n and n -1 पे कैलकुलेशन करले तो ता पे भी से सेम वैल्यू ही आसीबो सो मु डिटेल ताको ता पे भी डिराइव करनी सो ता पे भी बीटा प्राइम आसीबो से सेम ही आसीबो लैम्डा d by d ओके so let me write in this in different color ओके सो जदि हमें डार्क फ्रिंज पे भी हमें फाइंड आउट करबा तो ता पे भी से सेम एक्सप्रेशन आसो so that is beta prime equal to lambda d by d okay so कौन आम कंक्लूजन ड्रॉ कर परिबा दैट इज द ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज आर इक्वली स्पेस्ड ओके माने हमर जो इंटरफेरेंस पैटर्न जो आसीबो ड्यू टू दिस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट both the even and the bright and dark fringes are equally spaced so this is all about our Young's double slit experiment okay so it hame derive kole code ru hame start kole amar expression from this diagram okay so diagram हम draw करले and से तो हमें कौन दीटा distance नेले s2p s1p तो समान कर वैल्यू हम फाइंड आउट करले दीटा ट्रायंगल ने की then s2p whole square minus s1p whole square value हमें find out करले so very simple mathematics so we got 2yd next s2p and s1p को हमें split करले and s2p and s1p रो value हमें 2d substitution करले and s2p minus s1p हमें x substitution करले so ये आसले x रो value yd by d तो next this path difference रो value जो हमरो even multiple of lambda by 2 आसो से आसो हमरो maximum point that is maxima and जो दिस odd multiple of जो दी lambda by 2 आसो that is called minimum point that is minima तो next हमें find out करले कोन fringe width so fringe width माने होजे कोन the distance between this dark and bright fringes तो आप में गोटे dark fringes में हमें सॉरी bright fringes में हमें कैलकुलेट करले so से आसला lambda by d by d हमें dark fringes में कैलकुलेट करले से सेम जिंस होई आसीबो एंड तार कंक्लूजन होजे both the bright and dark fringes are equal तो एटा आछो हमर x2 - x1 equal to lambda d by d तो ये कौन फॉर्मूला रहला so lambda is the wavelength of the light we are using capital D is our screen to source distance and small d is our slit width okay and this is all about today's lecture so आज lecture में mainly कौन focus करले about one of the most important that is Young's double slit experiment जोटे हमें maxima and minima पे condition find out करले and fringe width मध्य find out करले so please share this video with your friends and please comment section में हमको जणांतु आपन किछि डाउट अछि और फीडबैक और सजेशन अछि and please post your doubt in YouTube Facebook comment section also I will be very happy to help all of you students and thank you for watching this video thank you so much